Hare Krishna. Yasomati nandana bhajavaramdhara bhukuvarandhara ha 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 ha. Yasomati nandana bhajavaramdhara bhukuvarandhara ha 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 ha. Gopi parandanam bhaktanam manoharam Gopi parandanam bhaktanam manoharam
Aside from yesterday, we've been continuation of the day-to-day discussion on Shikshastra. हरे कृष्ण। तो हम शिक्षा अष्टकम पे अपनी चर्चा जारी रखते हैं। We have discussed, at least not in complete detail, but in some ways, the first 4 verses. तो हमने पूरे विस्तार से तो नहीं, लेकिन पहले 4 श्लोकों पे चर्चा की थी। Who remembers what is the first verse? What is the essence of the first verse? Who knows? किसको याद है पहले श्लोक जो है शिक्षा अष्टकम में, उसका सार क्या है? 7 main benedictions
course, 7 are the prominent ones, but there are unlimited benedictions. The 7 main benedictions as given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And what are they? तो प्रभु ने बताया कि 7 वरदान, तो हमें बताएं हाँ 7 मुख्य वरदान हैं, क्योंकि हरिनाम के जो वरदान हैं वो तो अनंत हैं, लेकिन 7 ऐसे मुख्य लाभ हैं जो हरिनाम करने से प्राप्त होते हैं, वो बताए गए हैं पहले श्लोक में। और कोई? हृदय को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है भौतिक दूषण से हरिनाम। हरिनाम जो है वो रक्षा करता है जितने भी भौतिक जगत में संघर्ष हैं या जो खतरे हैं उनसे रक्षा करते हैं। सौभाग्य की सृष्टि करता है, जागृत करता है। तो हर एक को इसका अनुभव होता है, वास्तविक अनुभव, कि जब कोई हरिनाम जप करता है तो सौभाग्य का उदय होता है। It is a life of transcendental knowledge. It gives life to transcendental knowledge. सारे दिव्य ज्ञान का ही जीवन है, या फिर यूँ कहें कि दिव्य ज्ञान को जीवन प्रदान करता है हरिनाम। It's an unlimited ocean of spiritual happiness. आध्यात्मिक आनंद का अनंत सागर है हरिनाम। It gradually awakens one's eternal loving relationship with Krishna in the spiritual world. और धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत में जो कृष्ण के साथ हमारा प्रेममय संबंध है उसको हरिनाम जागृत करता है। और अंत में बताया है सर्वात्म स्नापनम, अर्थात ये अंदर बाहर सब को शुद्ध कर देते हैं। The holy name is Krishna himself, complete in all of his energies in transcendental sound. तो हरिनाम जो है स्वयं भगवान कृष्ण है, और इस दिव्य ध्वनि में भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। तो ये 7 वरदान बताने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं या क्या भाव व्यक्त करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरा श्लोक कौन सा है भिक्षाष्टकम का? It does, it removes the blocks, the contaminations, the unwanted desires from the heart. तो जो हरिनाम है वो हृदय से जो अवांछित इच्छाएं हैं या जो अनर्थ हैं उनको दूर करने में मदद करता है, दूर करते हैं। But following suit with the first verse, what is the second verse really saying? लेकिन यदि हम क्रमवार देखें तो पहले श्लोक के बाद पहले श्लोक में हरिनाम की महिमा और उसके वरदान बताए गए हैं, अगले श्लोक में क्या समझाया गया है? After explaining all the benefits, and there's no rules, no regulations, one can chant anytime, anywhere. The Lord ends Durdaiva. Durdaiva means unfortunate, but the word applies in a more general sense. I commit offenses. Therefore, there's no taste for chanting. तो आगे और बताया गया है इसके लिए कोई नियम नहीं है, जप करने का विधि नहीं है, लेकिन दुर्दैव, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हरिनाम नहीं कर पाता हूँ। कि दूसरे शब्दों को कहें तो क्योंकि मैं अपराध करता हूँ इसलिए मेरे अंदर हरिनाम करने के लिए कोई रुचि ही नहीं। So we understand the process is twofold, to chant and to avoid the offenses. तो इस तरह हम समझते हैं कि ये विधि में 2 तरह से कार्य करती है,
एक तो हरिनाम जप करना है, दूसरे अपराधों से बचना है। You can chant the holy names for, as it says in the Chaitanya Charitamrita, for thousands of lifetimes and never get the benefit of the chanting. Because of offenses. And then the third verse helps us to establish our fixation, our steadiness in devotional service by listing what? What is the third verse? तो तीसरे श्लोक में भगवान की भक्ति में या हरिनाम के प्रति हमारी दृढ़ता कैसे आए, इसके बारे में बताया गया है। तो क्या करना है? तीसरा That's the Sanskrit. Tell us all about it. What are the four principles that are listed there? Yeah. Humility, tolerance, pridelessness, respect for others. One practices, cultivates these four characteristics of one's personality, and then one is free from the tendency to commit offenses, and at the same time they are fixed in their execution of devotional service. तो तीसरे श्लोक में चार गुण बताए हैं: विनम्रता, सहिष्णुता, दंभहीनता और सभी को मान देना। ये चार गुण जब हम कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास करता है तो अपराध करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। और ये गुणों का विकास होने से फिर परिणाम क्या होता है? हरिनाम जप करने के प्रति स्वाभाविक रूप से रुचि आ जाती है। Practice this third verse more and more, and you'll find that this awakens the chanting, the nectar of the chanting of the holy name. यदि आपको हरिनाम करने में रुचि नहीं है या संघर्ष हो रहा है तो इस तीसरे श्लोक का अधिक से अधिक अभ्यास करें और आप देखेंगे कि अपने आप जो है आपका हरिनाम करने में रुचि जागृत होती है। And then now one is situated, one's engaged in devotional service. And it mentions that how much of the anarthas are removed on the stage of Nishta? What percentage of anarthas are moved before one can move beyond Nishta, be fixed in Nishta? So, Bhaktivinoda Thakur explains that 75% of one's anarthas, and when they're removed, then one is established fully in Nishta. तो जब कोई इस तरह भक्त हरिनाम करता है, भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, तो उसके बाद वो भक्ति में सेवा में लगने के बाद कौन सी स्थिति ऐसी आती है जहाँ कहते हैं कि निष्ठा में आ गए हैं। निष्ठा के स्तर पर कितने अनर्थ दूर हो जाते हैं? तो बताया कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि निष्ठा के स्तर पे 75% अनर्थ दूर हो जाते हैं। Bhaktivinoda Thakur mentions that devotees should be somewhat cognizant or aware what stage of practice that they're on, so they can understand how they go to the next stage. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि भक्त को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ये समझने में कि भक्ति कौन सी अवस्था में चल रहा हूँ, ताकि इससे उसको मदद मिलेगी भक्ति की अगली अवस्था तक पहुँचने में। Each stage has characteristics, and by observing the characteristics that one is exhibiting, one can understand, oh yes, I'm still struggling with anartha nivritti, I am fixed in nishta, like that. भक्ति की हर अवस्था के अलग अलग लक्षण हैं और उन लक्षणों को अवलोकन करने से व्यक्ति समझ सकता है कि अभी मैं अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में चल रहा हूँ या मैं निष्ठा के स्तर पे एकदम पहुंच चुका हूँ अभी। Now the next verse takes it to another level of bhakti.
तो अभी अगला श्लोक जो है वो हमें भक्ति के एक अगले स्तर पे लेके जा रहा है। The Lord says, don't want wealth, don't want followers, don't want the pleasures of the opposite sex, don't even want to be known as a great orator of spiritual knowledge. I don't want liberation. What do I want? तो भगवान कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, तो फिर क्या चाहिए? I just want to serve life after life. It doesn't matter. मैं जन्म जन्मांतर सेवा करना चाहता हूँ, कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So on this stage, the chanting of the holy name is more like nectar rather than just a process of purification. तो जब ऐसी मनोभाव, ऐसी अवस्था आती है, तो उस समय हरिनाम कीर्तन अमृत पान के समान है, बजाय कि शुद्धिकरण की विधि के लिए हम इसको कर रहे हैं। Before, the holy name is more like medicine. इस अवस्था का पहले हरिनाम एक औषधि की तरह है। औषधि। No more medicine, now it's amrita. उस अवस्था के बाद जो है वो दवा नहीं है, बल्कि वो अमृत हो जाती है। It's no longer the bitter medicine of struggling, it's the nectar of sweet taste. तो उसके बाद संघर्ष की कड़वी दवा के रूप में हरिनाम नहीं लिया जाता, बल्कि वो अमृत प्रदान करता है। Says, I don't want all of these material things. I simply want to serve. That's all. इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि मुझे ये भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल सेवा करना चाहता हूँ। चौथे श्लोक। And then we describe what are some of the characteristics of the devotee on that stage. Some devotees, when they hear the Kirtans, they become ecstatic, and others, the Kirtan has to be nicely orchestrated for them to feel happiness. तो उसके बाद इसके बारे में बताया गया है कि जैसे कोई भक्त जब कीर्तन करते हैं तो वो आनंद में आ जाते हैं, आनंद बहुत उनको प्राप्त होता है। लेकिन कुछ भक्तों के लिए कीर्तन जो है बहुत ही अच्छे वाद्य यंत्रों के साथ होना चाहिए, धुन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब उनको आनंद प्राप्त होता है। This is just like a flower when you put the seed in the ground. When the stem starts to grow, the first thing is a bud. It's just a little, the unopened flower. तो ये पुष्प की तरह है, जब उसका बीज हम बोते हैं तो पहले जो है कली खिलती है और वो So on this stage, the bud of love of God is starting to open, starting to manifest. तो उस स्तर पे जो कृष्ण प्रेम की जो कली है वो खिलना शुरू हुई है। And one starts to become attracted more and more to Krishna's pastimes, especially in Sri Vrindavan. और उसमें भक्त कृष्ण की लीलाओं के प्रति अत्यधिक आसक्त होता चला जाता है, विशेष रूप से वृंदावन लीला। So these are the first 4 verses we discussed, and now we'll go on to the 5th verse. तो ये 4 श्लोकों पे हमने चर्चा की है, अभी 5वें श्लोक पे बढ़ते हैं आगे। Is it on the board? Yes. Okay. Ayi nanda tanuja kinkaram Akitam mam vishame bhavam buddho Kripaya tavapara pankaja Stita duli sadrisham vichintaya Chen? Ladies?
Ayi, O my Lord, Nanda Tanuja, the son of Nanda Maharaj, Krishna, Kinkaram, the servant, Patitam, fallen, Mam, me, Visame, horrible, Baba Ambudo, in the ocean of nations, Kripaya, by causeless mercy, Tava, your, Parapankaja, lotus feet, Stita, situated at, Duli Sadrisham, like a particle of dust, Vichintaya, kindly consider. So the devotee is praying, O my Lord, O Krishna, O son of Maharaj Nanda, I am your eternal servant, but because of my fruitive acts, I've fallen into this horrible ocean of nations. Now please be causelessly merciful to me. Consider me a particle of dust at your lotus feet. तो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर गया हूँ। अब आप मुझ पर अहेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। So this is a prayer of humility. तो ये विनम्र भाव से की गई प्रार्थना है, Begging for both shelter and for service. जिसमें भगवान की शरण और भगवान की सेवा दोनों के लिए प्रार्थना की गई है। Prabhupada mentions this verse and he says we should practice chanting this along with chanting the holy name. He said this is how we approach the holy name in this mood. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक का जो भाव है, इस भाव के साथ हमें हरिनाम करना चाहिए। And why? क्यों? Because I'm being tossed by this horrible ocean of birth and death. क्योंकि इस जन्म मृत्यु के सागर में मैं बार बार आ जा रहा हूँ। I have no shelter. कोई शरण नहीं है मेरे पास, Material energy doesn't allow for us to take shelter. क्योंकि जो भौतिक शक्ति है वो हमें भगवान की शरण लेने नहीं देती है। The materialists, they think, well, if I have a nice, family arrangement, if I have good wealth, a nice position in society, I have shelter, I'm good, everything is nice. तो भौतिकतावादी व्यक्ति यही सोचता है कि हाँ, मेरे पास अच्छा परिवार है, अच्छा व्यापार है और अच्छा मेरा जो है नाम है समाज में, तो मेरे तो यही शरण है, मेरे को और क्या शरण चाहिए। They can't protect anyone, nor can they protect themselves. लेकिन बात यह है कि वे सभी इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं और ये भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। And therefore, my life is without certainty. I don't know what will happen. तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन तो फिर अनिश्चितता से भरा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। Please give me your shelter and allow me to serve. इसलिए हे प्रभु, आप कृपया मुझे शरण प्रदान करें और अपनी सेवा करने की अनुमति दें। This is the next stage. This is called ashakti, ये अगली अवस्था है जिसे कहते हैं आसक्ति, which means a desire to be established in one's eternal relationship with Krishna through a type of service that patterns that relationship. तो आसक्ति का अर्थ है कृष्ण के साथ अपने नित्य जो संबंध है उसको स्थापित करने की इच्छा, जो कि सेवा के माध्यम से व्यक्त होता है। Being in the material world means to be in a storm. Being in the material world means to be in a storm. भौतिक जगत में रहना इस तरह है कि एक तूफान के बीच हम रह रहे हैं, Which means that it's a very uncertain place. Anything can happen at any time. इसका
ऐसा इसलिए है कि ये बहुत ही अनिश्चित जगह है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। It's called padam padam ya vipadam. It's danger at every step. पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पे खतरा है, No shelter. कोई शरण नहीं है। And the shelters that the material energy offers, what they're called fallible soldiers. और जो शरण ये भौतिक शक्ति प्रदान करती है वो सब खुद ही पतित जीव हैं। Soldiers are supposed to be able to give protection, but these soldiers, the material shelters, are fallible, so they cannot give shelter. भौतिक शक्ति जो सेना हमें प्रदान करती है तो सेना से उम्मीद की जाती है कि वो रक्षा करेगी, लेकिन वो सेना जो है खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती। So on this stage, the devotee realizes the only shelter is Krishna. तो इस प्रकार से भक्त को ये साक्षात्कार होता है कि केवल कृष्ण ही एकमात्र शरण है और कोई नहीं। And it's explained that when we practice devotional service, we still have some residue, some little bit of our karma coming in the form of what's called parabdha karma, which means some Krishna shows you some of your attachments yet, so you can understand them and get free from them. तो ऐसे बताते हैं कि जब भक्ति की अवस्था आरंभ करते हैं तब भी कुछ जो है हमारे कर्म बचे रहते हैं, तो इसके प्रारब्ध कर्म जिसे कहते हैं, तो कृष्ण उनको हमारे सामने लेके आते हैं, कुछ आसक्तियों के रूप में लेके आते हैं, हमें दिखाते हैं ताकि हम उनसे भी मुक्त हो सकें। Now, but when we comes to this stage of Ashakti, all karmic influences are gone. लेकिन जब कोई आसक्ति के स्तर पे आ जाते हैं तो सारे जो कर्म के जो फल हैं, उनके प्रभाव हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। So as we mentioned, devotional service is divided into rules and regulations called Vaidhi Bhakti. We follow rules and regulations. When it becomes mature and the devotee becomes fixed in devotional service, it transforms into another stage of itself called Raganuga, or spontaneous attraction in devotional service. तो जैसा बताया गया है कि भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक प्रकार है वैदिक भक्ति, इसमें विधि निषेध का पालन करते हुए भक्ति की जाती है, लेकिन जैसे जैसे भक्त परिपक्व होता जाता है, भक्ति में दृढ़ हो जाता है, तो भक्ति की अलग अवस्था में आता है, जैसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, जिसमें भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण होता है। At that time, one's spiritual identity, who you are in the spiritual world, starts to awaken. रागानुगा भक्ति के स्तर पे भक्त की आध्यात्मिक पहचान कि आप आध्यात्मिक जगत में आपकी स्थिति क्या है, वो प्रकट होने लगती है। One gets their own realizations based on their service and chant, especially chanting the holy name of what is my rasa in the spiritual world. तो हरिनाम करते करते और सेवा करते करते भक्त को उस स्तर पे ये साक्षात्कार होने लगता है कि आध्यात्मिक जगत में मेरा रस क्या है। And then at that stage, the spiritual master appears to you in one form or another and confirms this is your relationship with Krishna. और उस अवस्था में आध्यात्मिक गुरु शिष्य के सामने प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप में, और उसे बताते हैं, समझाते हैं कि कृष्ण के साथ आपका नित्य संबंध ये है। But the devotee should never speak about it. लेकिन भक्त को उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। Don't discuss it with others. It remains gupta. चर्चा नहीं करनी चाहिए उसकी, ये गुप्त रूप में रहना चाहिए। Because if you discuss it with others, you lose it. क्योंकि सबसे चर्चा करोगे तो आप ही इसको खो दोगे। You don't lose the identity, you just lose the awareness, that's all. ऐसा नहीं कि आप उस संबंध को खो दोगे, लेकिन उस संबंध की जो आपको जानकारी है या स्मृति है उसे खो दोगे। Devotees would ask Prabhupada, oh, who are you in the spiritual world? भक्त लोग प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद जी आप कौन हैं, आध्यात्मिक जगत में आपकी स्थिति क्या है? Prabhupada would say, that you do not require. प्रभुपाद जी बोले कि ये आपको जानने की जरूरत थोड़ी है। In other words, none of your business. आपको लेना देना नहीं है इससे कोई। Another time,
In fact, I asked Prabhupada many times, but he had different ways of responding. वास्तव में ये प्रश्न बार बार प्रभुपाद से पूछा गया अलग अलग समय पे, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रभुपाद जी भी उत्तर दिए. One time they asked him the same question. Prabhupada said, if I told you, you would faint. एक बार प्रभुपाद जी ने इसी प्रश्न का उत्तर दे दिया, बता दूंगा मेरी पहचान क्या है तो आप बेहोश हो जाओगे. So a person on a pure level of bhakti, they know who they are in the spiritual world. At least they know their rasa. That much they know. तो जो भक्ति के शुद्ध स्तर पे जो भक्त हैं वे जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हमारी स्थिति क्या है. कम से कम वो अपना रस, किस रस में हम भगवान जुड़े हुए हैं वो जानते हैं. But the only one you should discuss it with is your spiritual master. लेकिन इसकी चर्चा बस एक ही व्यक्ति से कर सकते हैं, वो है आध्यात्मिक गुरु. Or if your spiritual master is not personally present, you may find someone who is on the same level of your spiritual master and develop that relationship. और यदि आध्यात्मिक गुरु उपस्थित नहीं है हमारे बीच में तो उसमें हम उनके स्तर के कोई भक्त को उनके साथ संबंध स्तर करके बता सकते हैं. Personal experiences that devotees have in their Krishna consciousness should not be broadcast. It's like, hey, Krishna came to me last night and he said, you're my best devotee. तो भक्त को जो व्यक्तिगत जो आदान प्रदान होते हैं या साक्षात्कार होते हैं कृष्ण भक्ति की यात्रा में, उसको जो है सबके सामने उद्घोषित नहीं करना चाहिए कि कल जो है कृष्ण आए थे सपने में और कृष्ण ने कहा कि अरे सबसे अच्छे भक्त तुम ही हो मेरे. Sometimes devotees make that mistake. They broadcast, and when they broadcast, they lose. They forget. तो भक्त लोग ऐसा यदि इसको सबको बताते फिरते हैं तो एक गलती कर देते हैं, क्योंकि इसको बताने से फिर उसको आप खो देते हैं. For instance, I was preaching in America, and there was one young lady. She was coming to the classes regularly. तो मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा था और एक युवती जो है कक्षा में नियमित रूप से आ रही थी. And then when she would ask a question, she would say, "Oh, Maharaj, last night I had a dream and Prabhupada appeared to me in my dream and he said so many things." तो जब वो प्रश्न पूछती तो कई बार कहती थी, हाँ महाराज कल प्रभुपाद जी आए थे सपने में और उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई. And then I told her, you shouldn't speak this publicly. You keep it to yourself. It's your private relationship. तो मैंने उससे कहा कि आपको ये सबके बीच में बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने पास रखिए, ये आपका व्यक्तिगत संबंध है प्रभुपाद जी के साथ, ये चर्चा है प्रभुपाद जी के साथ. But she didn't listen to me. She did it again. लेकिन मेरी बात नहीं सुनी, वो तो बताती रही. And there was no doubt Prabhupada was appearing in her dream. She had a nice relationship with Prabhupada. तो इसमें कोई संशय नहीं है, प्रभुपाद जी सपने में आते थे और अच्छा संबंध भी था. But then I mentioned, if you keep speaking it, you'll lose it. लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप बताते ही रहोगे तो फिर इसको खो दोगे फिर आप. So I didn't see her for about a year. तो एक साल मैंने उसको देखा ही नहीं. And then one day we met in the airport in Mumbai. और एक बार फिर मुलाकात हुई मुंबई एयरपोर्ट पे. And first thing she came up to me and said, "Maharaj, you were right. The dreams don't happen anymore." तो फिर मेरे पास आके बोली, महाराज पहली बात यही बोली कि आप सही बोल रहे थे, अभी वो सपने आते ही नहीं. So that's something personal, and sometimes you want to say it so we can impress our fellow devotees that I'm so advanced. Prabhupada has come. तो ये जो है ये एक व्यक्तिगत वस्तु है. ये कई बार भक्त लोग दूसरों को बताना चाहते हैं, ये बताने के लिए देखो मैं कितना उन्नत भक्त हूँ कि प्रभुपाद जी वगैरह अपने सपने में आते हैं. We can discuss it with our spiritual master or someone who's in the role of our spiritual master. इसकी चर्चा हम आध्यात्मिक गुरु से या आध्यात्मिक गुरु के स्तर पे जो भक्त हैं हम उससे कर सकते हैं, Not in general. सामान्य रूप से नहीं करनी चाहिए. So this verse establishes our relationship with Krishna in the spiritual world. तो ये श्लोक आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है. Our
material body is becoming more spiritualized, and on this stage, Leela Seva, that means when we start to, at least internally, develop our mood of serving Krishna according to our actual identity. तो उस स्तर पे जो है लीला सेवा का अर्थ कि कम से कम हृदय में हम वो भाव विकसित करने लेते हैं कि हमारी पहचान के अनुसार हमें कृष्ण की सेवा किस तरह करनी है. But in order to practice that externally, one has to qualify themselves. One has to have the knowledge of one's inner identity. लेकिन उसको बाह्य रूप से उस सेवा को करने के लिए व्यक्ति को योग्य बनना पड़ेगा, उसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि वास्तव में मेरी पहचान के अनुसार कैसे सेवा करनी है. And that can be revealed. One's inner identity can be revealed from one's spiritual master. और ये आंतरिक पहचान हर जीव की आध्यात्मिक गुरु बता सकते हैं, An advanced sadhu, या कोई उन्नत साधु बता सकते हैं, or even directly within the heart by Krishna as the super soul. या कृष्ण ही हो सकता है हृदय में प्रकट होकर बता दें. And at this stage, one is absorbed in service. They're not interested in jnana, karma, or any kind of happiness, personal happiness. और उस अवस्था में भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण है, कर्म के लिए, ज्ञान के लिए या और किसी प्रकार की व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता है. By keeping that in, it grows stronger and stronger. और इस मनोभाव को जब साथ में लेके आगे बढ़ते हैं तो भक्त और ज्यादा मजबूत होता जाता So है. in the previous stage, which we mentioned, ruchi, one is more attached to service. तो जो पिछली अवस्था बताई रुचि, तो इसमें भक्त सेवा के प्रति बहुत आसक्त होता है. But in ashakti, one becomes more and more attached to Krishna. लेकिन आसक्ति के स्तर पे भक्त अधिक से अधिक कृष्ण के प्रति आसक्त होता चला जाता है. And the word kinkaram in that verse means, what karomi, I do, how can I serve? और किंकरम शब्द का अर्थ श्लोक में है क्या करूं, किस तरह मैं आपकी सेवा करूं. Yeah. So this prayer is a very necessary prayer for devotees to recite often, because it helps to establish one at the lotus feet of the Lord in devotional service. तो ये जो प्रार्थना है, ये भक्तों के लिए अक्सर प्रार्थना इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है भक्ति व सेवा में भगवान के चरण कमलों में हमको स्थित करती है. Okay, so that's the fifth stage. Any questions, comments, and about anything in relationship to the first five verses that we already covered? तो ये 5वां स्तर हो गया. किसी का कोई प्रश्न है? कोई 5वां श्लोक चर्चा जो किए हैं उनके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for this wonderful explanation and summarization of all the verses. Maharaj, you also mentioned yesterday or day before that you will mention more characteristics in this fifth verse also. So is that 4 characteristics more characteristics of person when someone who is in this stage of mentioned in fifth verse? the 4th verse? Ruchi. The characteristics of ruchi. Characteristics of this is that one is more attached to Krishna now than just service. One becomes very attached to Krishna, prays for shelter, is awakening their eternal relationship with Krishna. It's starting to develop. It's actually the beginning of spontaneous devotional service. तो प्रश्न ये है कि आप और अधिक लक्षण जो चौथे 5वां श्लोक है वो उसके भक्तों के बताइए. तो महाराज बता रहे हैं कि उस 5वें श्लोक का जो अवस्था है आसक्ति, उसमें भक्त कृष्ण के प्रति अधिक से अधिक आसक्त हो जाता है. कृष्ण की शरण प्राप्त करने के लिए
अधिक से अधिक प्रार्थना करता है। But one has to remember all of this evolves and progresses in perfection by chanting the holy names. और इस प्रकार से वो अपने जो संकल्प है उसको याद करता है और हरिनाम करते करते कृष्ण भक्ति में और आगे प्रगति करता चला जाता है। And some of the other moods that are connected with this verse is mentioned here in this series of verses. और कुछ मनोभाव और भी हैं जो इस अवस्था में प्रकट होते हैं, वो यहाँ बताए गए हैं श्लोकों की श्रृंखला में। Ayi Nanda, I am your eternal servant, but I forgot who I am. अई नंद, मैं आपका नित्य दास हूँ, लेकिन मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। Because I've forgotten, I've fallen into this ocean of material suffering. और चूंकि मैं भूल गया इसलिए भौतिक कष्टों के इस सागर में मैं पड़ा हूँ। But I know I'm your eternal servant. लेकिन मैं अभी जानता तो हूँ कि मैं आपका नित्य दास हूँ। Save me from this ocean of material suffering and put me in pure love, pure devotional service unto you. तो कृपया आप मेरा इस जन्म मृत्यु विषम सागर से उद्धार कीजिए और आपके चरण कमलों में मुझे स्थान दीजिए, शुद्ध भक्ति में सेवा प्रदान कीजिए। One is completely dependent on the mercy of the Lord. तो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की कृपा पे आश्रित होता है इस अवस्था में। It's a prayer of humility. It's a prayer of helplessness. ये जो प्रार्थना है विनम्र भाव से की गई प्रार्थना, असहाय मनोभाव से की गई प्रार्थना है। Save me, Krishna. मुझे बचाइए कृष्ण। Any other comments, questions? Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, I had one request, if we could hear from Your Holiness on this special occasion of Bhadra Purnima about the importance of Srimad Bhagavatam. Oh, the importance of Bhagavatam? Oh yeah, Bhadra Purnima today. तो प्रश्न है कि महाराज आज भाद्र पूर्णिमा का शुभ अवसर है, तो आप श्रीमद् भागवतम के महत्व, इसके वितरण के ऊपर कुछ बताइए। Well, out of all of the Vedic scriptures, Bhagavatam is called Amalam Puranam, the pure of all of the Puranas, because it has no karma, no gyan, no yoga. It just deals with pure devotional service to Krishna. तो बहुत अद्भुत है, सारे वैदिक शास्त्रों में श्रीमद् भागवत को अमल पुराण कहा गया है, क्योंकि इसमें न कर्म है, न ज्ञान है, न योग है, केवल शुद्ध भक्ति ही है। It mentions that one who regularly and carefully, in a systematic way, reads Srimad Bhagavatam, then one's natural devotion to Krishna will awaken. तो स्वाभाविक रूप से और नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, तब कृष्ण के प्रति आपका स्वाभाविक प्रेम जागृत हो उठेगा। Bhagavatam is non-different than the Supreme Lord Himself. भागवतम जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। It's called the literary incarnation of the Lord. ये भगवान का साहित्यिक अवतार इसको माना जाता है। So the cantos corresponds with a different part of Krishna's transcendental body. इसका एक एक स्कंद जो है वो कृष्ण के दिव्य शरीर का अंग है। His feet are the first and second cantos, and as you go up to the higher cantos, it travels up to the body of the Lord in different places. They're represented by different cantos. And then the smiling face of the Lord is the 10th canto. इसके जो पहले दो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल हैं, और इसके बाद आगे जाते जाते भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं, इनके अलग अलग स्कंद, और जो मुख कमल है वो है दशम स्कंद। So read the Bhagavatam every day. तो हर दिन आप भागवतम को पढ़िए। Nasta prayeshu abhideshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhagavati naistiki. One should regularly hear from Srimad Bhagavatam, and of course
render service to the pure devotee at the same time. तो व्यक्ति को नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध भक्त की सेवा भी करनी चाहिए. The results of Bhagavatam reading means that one becomes more and more engaged in devotional service. तो भागवत अध्ययन का परिणाम यह है कि व्यक्ति और से और अधिक भक्तिमय सेवा में जुड़ता चला जाएगा. Just to have Bhagavatam in one's home means to have a deity of Krishna in the form of transcendental knowledge. भागवतम को घर में रखना ही इस तरह से है कि कृष्ण का विग्रह जो है हमारे घर में है दिव्य ज्ञान के रूप में. Some places, I don't know, do we do it here? We put the books on the altar also? Yeah. Yeah, तो कई जगह विग्रह ऑल्टर में जो है रखा जाता है. श्रीमद् भागवतम को यहाँ पे भी रखा है. and we could put a garland on them too. और उसके ऊपर हमें एक माला भी अर्पण करनी चाहिए भागवतम को. And so it's Krishna in transcendental sound, the Srimad Bhagavatam. तो ये कृष्ण हैं जो दिव्य ध्वनि के रूप में है, दिव्य वाणी के रूप में है श्रीमद् भागवतम में. Consists of about 335 chapters. 335 अध्याय हैं, 18,000 verses. 18,000 श्लोक हैं. And the 10th canto, which is the essence of the Bhagavatam, is half the Bhagavatam. 10वां स्कंद जो है, जो भागवतम का सार है, लगभग आधा भागवत उसमें ही है. आधा भाग, It's half. लगभग आधा. So there are 10 subject matters that are covered in the Bhagavatam. तो 10 विषय हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित किए गए हैं. Can someone read those 10 subject matters? We go to second canto, 10th chapter, first verse, 210:1, and lists the 10 subject matters of the Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय हैं वो हम वहां से पढ़ सकते हैं. दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय, पहला श्लोक. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग किए गए हैं. एक है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतय, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय. These are the 10 subject matters. They're not necessarily sequential by canto, but some cantos have more emphasis on one type of subject matter than others, but all of them are mixed within the 12 cantos of Bhagavatam. तो ये 10 विषयों की चर्चा की गई है. ऐसा नहीं है कि एक क्रमवार एक के बाद एक विषय है. किसी स्कंद में किसी एक विषय पे ज्यादा जोर दिया है, किसी में किसी और पे, लेकिन संपूर्ण भागवतम में इन 10 विषयों की व्याख्या की गई है. Now we should take shelter of Bhagavatam because everything we need is in Srimad Bhagavatam. तो हमें श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हमें जो भी चीज चाहिए वो श्रीमद् भागवतम में है. It's called Amalam Puranam. It's also called Paramahansa Samhita. इसे अमल पुराण कहा जाता है, साथ ही इसे परमहंस संहिता भी कहा जाता है. It's meant for the topmost swan-like personalities. ये जो है परमहंस स्तर के जो भक्त हैं या लोग हैं उनके लिए इसको कहा We गया can है. understand it by Srila Prabhupada's purports. Srila Prabhupada spent so much time understanding each verse, referring to the Acharyas' commentaries and adding his own realizations according to the nature of the Western mind. तो इसको हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के माध्यम से समझ सकते हैं. श्रील प्रभुपाद जी ने आचार्यों की जो अद्भुत टीकाएं हैं उनको आधुनिक व्यक्ति के मस्तिष्क के समझे इस तरह से तात्पर्य में दिया है. So read, तो पढ़िए. and if you don't have a set, if you buy one, then you are inviting Krishna into your home in the form of transcendental knowledge.
तो आप इसको पढ़िए, और यदि आपके पास भागवतम सेट घर पे नहीं है तो उसको लीजिए। इस प्रकार से आप जो है कृष्ण को अपने घर में आमंत्रित करते हैं दिव्य ज्ञान के रूप में। तो अभी जो भक्त श्रीमद् भागवतम लेना चाहते हैं तो महाराज व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करके अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। हरि बोल। Would you like to hear a little rhyme? You like rhymes? It's तो English. एक कविता आप सुनना पसंद करेंगे? कविता पसंद है आपको? You can't translate it because it's English. Because it doesn't translate into Hindi. Read the creed. That's the need. Take the lead. Get up to speed, and you'll be happy indeed. Read the creed. That's the need. Take the lead. And get up to speed, and you'll be happy indeed. Is that okay? Creed is another word for Shastra. Read the creed, take the lead, that's the need, get up to speed, you'll be happy indeed, and stop smoking the weed. That's a little extra there. That's another Charya's purport. So yeah, it's by reading Shastra you become Shastra Gyan. Shastra Gya. तो शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो हम शास्त्रज्ञ हो जाते हैं। Okay, so ठीक है, तो can't pick up those boxes. Okay, so Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. The creed, that's the need. हिंदी की बंगाली यहाँ पे बंगाली Hare Krishna. हरे कृष्णा। पाठ सखा प्रभु, इस ग्रेस पाठ सखा प्रभु एक श्रीमद् भागवतम सेट ले रहे हैं, उनके लिए हरि बोल। और मुकुल माता जी, बकुल माता जी, तो वो भी भागवतम सेट ले रहे हैं, उनके लिए भी हरि बोल। और जो भक्त यहां पे उपस्थित हैं श्रीमद् भागवतम लेना चाहते हैं,
हरे कृष्णा। और बहुत ही खुशी की बात है कि हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु 5 श्रीमद् भागवतम सेट ले रहे हैं। हरि बोल। और कौन सौभाग्यशाली है जो भाद्र पूर्णिमा के अवसर पर पुस्तक भागवत प्राप्त कीजिए व्यक्ति भागवत के हाथों से। इसी क्रम में इंदौर से हमारे एक भागवत सेट ले रहे हैं सीए निर्मेश राठी प्रभु। हरि बोल। तो श्रीमद चंद्रमौली महाराज के हर कमलों से हस्ताक्षर प्राप्त करके श्रीमद् भागवत सेट प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में एक और श्रीमद् भागवतम सेट ले रहे हैं भोपाल से सी अजय खंडेलवाल प्रभु। तो उनके लिए भी श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज अपने हस्ताक्षर और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भागवत पढ़ के उनका जीवन सफल हो और आगे भी इसका वितरण करें। हरे कृष्ण।